Hey guys, hello, what's up? Now, I've come up with a diagram session part 3 and इसमें again let's gain the confidence on the diagrams part 3. अंदाज़ा तो आ ही गया होगा स्लाइड को देख के मेरे पीछे जो है that what are we going to do the diagrams or which chapter we are going to cover up in this. Definitely it's excretory system because मैंने यहाँ पे kidney show किया है. So here is your Pooja Ma'am Be Right Guru, your Be Right Guru Biology Guru Pooja Ma'am, and I am going to start with the session 3 of diagrams, that is let's gain the confidence and let's wind up with all our diagrams, right? So the very first slide that has come up to you is kidney ka human excretory system, that is the entire human excretory system is in front of you. Now चौंकाने वाली बात ये है कि अभी कुछ स्कूल के प्रीलिम्स में भी ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा गया था, राइट? नाउ यूजुअली इतने सालों तक ये डायग्राम्स ड्रॉ के लिए नहीं आते थे. इट वाज जस्ट given and you need to study the diagram and answer the questions, but now it has happened so कि हमें आपको ये diagram draw भी करना है, so practice भी हो जाएगा labeling के साथ साथ, right? So here what all things are being shown. First we need to see this. Now यहाँ पर if you see there are kidneys, a pair of kidneys which is shown. I'll take the black color. Okay, so yes, of course this is the kidney, right? Kidney. Now there is pair of kidneys. Now many a times यहाँ पर adrenal gland भी बताया जाता है. Okay, a cap like structure, adrenal gland which is present. Okay, then in that case you can label this as adrenal gland. Okay, keep noting guys, keep noting, that's very important. Now many a times कुछ questions में ऐसे होता है कि इसे specifically आपको right kidney label करना होता है and उस तरफ वाले को आपको left kidney label करना होता है. That's because they want you to answer the question based on that कि क्यों left थोड़ा सा lower है और right थोड़ा सा ऊपर है. So based on that ये labelings होते हैं. Otherwise only kidney is fine, perfectly fine. Now the very important part is this. यहाँ पे तो मैंने कलरफुल डायग्राम दिखाया है, so you can distinctively, I mean you can make a difference over here कि कौन सा aorta और कौन सा vena cava, right? But when you are drawing it या फिर आपको पेपर में जब ये डायग्राम दिया जाता है, it's like black and white diagram, right? Then in that case आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? It's very simple. जो आगे की तरफ में है and उसे the vessel which is in the front and जो light shaded है that will be dorsal aorta. So you can label this as dorsal aorta. Okay, and जो पीछे की तरफ में जो dark color का है that is vein, or you can label this as inferior vena cava. Yeah, I'm sorry, it's inferior vena cava. Yes, this is inferior vena cava, right? So it's very clearly, मतलब आपको एक चीज तो पता चली गई होगी कि जो डार्क शेडेड है जो आगे की तरफ में है that will be dorsal aorta. डार्क शेडेड फ्रंट में जो दिखाया होगा that will be dorsal aorta, and बैक में ना देखो ये हल्का सा पीछे दिखाया ना. Now here also you can see it's a 2D diagram, but we can feel that कि inferior vena cava थोड़ा सा पीछे की तरफ में दिखाया, so that is vein, or you can write down inferior vena cava. Now the one which is going inside both the kidneys are renal artery. ठीक है, the one which is going inside the kidney are renal artery, and जो kidney से बाहर आ रहा है that is renal vein, right? That is renal vein. You can see जो kidney से बाहर आने वाला that is renal vein. Okay, now let me change the color and let me show you the ureters. Now usually ureters यहाँ से निकलेंगे. I'm drawing it only purposely for you because मुझे आपको draw करके दिखाना था
यस, सो पेल्विक रीजन से यूरेटर्स निकलेंगे and they will enter into the urinary bladder. As you can see, urinary bladder तक यहाँ पर enter करेंगे. Got it? So these are ureters, right? Now it is entering into urinary bladder. So let us show urinary bladder. This is urinary bladder. Yes, urinary bladder, a muscular sac-like structure which is present in the pelvic region just below the lower abdomen. A muscular sac-like structure which is present in the pelvic region just below the lower abdomen in which the ureters are opening, right? Very simple. मैंने इसका लोकेशन भी डिस्क्राइब कर लिया. Now here you can see ये जो राउंड वाला स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर, this is the sphincter muscle. तो आइडियली इसे लेबलिंग आपको करना है, मतलब जब डायग्राम दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, दे विल पर्पसली आस्क ओवर हियर दैट विच, आई मीन सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे, जैसे ये लाइन ड्रॉ करके पॉइंट आउट करेंगे एंड दे विल आस्क यू दैट व्हाट इज प्रेजेंट ओवर हियर. सो इट्स वेरी सिंपल, स्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट बिकॉज स्फिंक्टर मसल्स जो है जब वो रिलैक्स होगा देन द यूरिन विल फ्लो फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इनटू द यूरेथ्रा, राइट? सो द लास्ट स्ट्रक्चर इज यूरेथ्रा. Alright guys, इससे एक लॉजिकल सीक्वेंस भी अपना तैयार होता है. So the logical sequence is that the urine is flowing from the kidney into the ureters. Ureters में से it will flow into the urinary bladder. From the urinary bladder it will go into the urethra, right? Now the blood which is coming from the dorsal aorta is oxygenated blood but impure, and the blood which is flowing out into the inferior vena cava is deoxygenated blood but pure blood. अब ये प्योर कैसे हो गया? बिकॉज किडनी के अंदर जाके ब्लड जो है वो फिल्टर हो चुका है बाय द प्रोसेस कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, विच आई विल बी शोइंग यू इन द नेक्स्ट डायग्राम. ओके, सो ये जो है ये प्रोसेस आपको यहाँ पे पता चल जाता है. दिस इज व्हाट इज द एंटायर एक्सक्रीटरी सिस्टम. Now renal vein carries deoxygenated pure blood, renal artery carries oxygenated impure blood which is having lot of purities of urea and uric acid, nitrogenous waste inside it. ओके, एंड यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन फॉर्म्ड हुआ है किडनी के अंदर, दैट इज गोइंग टू फिल्ड अप ओवर हियर. सिंस इट्स अ मस्कुलर बैग, सो ये पूरी अच्छी तरीके से यूरिन फिलअप होने की वजह से वो कंप्लीटली स्वोलन होगा, मतलब रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा. स्फिंक्टर मसल्स यहाँ से रिलैक्स होंगे, सो द यूरिन विल फ्लो डाउन थ्रू द यूरेथ्रा. So that's it. This is what is about the excretory system. Let's move on to the next diagram, that is the B diagram. Structure of kidney. Guys, this is the structure of kidney. Now usually ये आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है. 2018 एंड 19 का पेपर अगर आप, आई थिंक 2018 का पेपर अगर आप ओपन करोगे तो उसमें ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा गया है. येस, यू नीड टू ड्रॉ अ टीएस ऑफ आर्टरी. सो लेट्स सी, ये ऑलरेडी डायग्राम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है. तो डायग्राम को ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है. लेट मी शो यू दिस कि कैसे आप इसका आउटलाइन बनाओगे. इट्स वेरी सिंपल. यू जस्ट ना सी, ये इस तरफ में ड्रॉ करके दिया है ना, सिंस आई एम लेफ्टी सो आई विल ड्रॉ द सी दिस साइड, राइट? अगर आप राइटी हो तो आप इसका ऑपोजिट भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? तो चलो मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ. सिंस मोस्ट ऑफ यू आर राइटी, लेट मी शो यू दैट हाउ यू कैन ड्रॉ दिस. वेरी सिंपल. यू जस्ट मेक अ सी शेप, ठीक है? जब आपने एक प्रॉपर सी शेप बना दिया तो उसको पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है? यस, मतलब अंदर का सी स्मॉल एंड देन आउटर विल बी बिगर, मतलब बाहर का थोड़ा बड़ा बना के उसको अंदर नॉच की तरफ लेके जाओ एंड जस्ट शो दी यूरेटर विच इज कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है? हाँ, नाउ ओवर हियर ये जो आपने सेकेंड लाइन बनाया है, टेकिंग अ हेल्प ऑफ इट आप इसके पिरामिड्स बना दो. सो व्हाट वी कैन डू इज, अब आप तो ये पेंसिल से ड्रॉ करोगे, सो आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट. अब आप तो ये पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो आप रब भी कर सकते हो. You just make pyramids over here. Okay. Now, it's not necessary कि आपको कितने pyramids बनाने हैं. आप जितना चाहे उतना pyramids बना सकते हो. That depends upon the size of the diagram what you are drawing it. Okay. ये pyramids आपने बना दिया. Now this becomes the medulla region. Okay. अब ये जो region है यहाँ से आप branching बता दो.
Okay, branching, so this clearly indicates that this is a pelvic region and this is a medulla region and this is the cortex. Cortex में आपको dots बना देने हैं. Okay, dotted appearance दिखाना पड़ेगा because उसका एक give reason पूछा जाता है. Keep noting guys, keep noting. Dotted appearance का give reason आपसे पूछा जाता है. So yes, of course you have to make this dotted and you have to show these pyramids with stripes. Okay, ऐसे stripes वाला दिखा दो pyramids. Now, why the pyramids are also appearing in a striped, like, you know, why it is showing a striped appearance, वो भी आपसे give reason पूछा जाता है. So, why the cortex is showing a dotted appearance? That's because of the presence of malfeasance corpuscles, that is glomerulus, which is a knot-like mass of capillaries. The blood is flowing with a very high pressure over there. That's why it's appearing red dot. And of course, the presence of PCT also. And medulla region, striped appearance क्यों दिखा रहा है? That's because, मतलब pyramids specifically striped appearance क्यों दिखा रहा है? Because there is a presence of renal tubules in that. So tubular structure के वजह से वो striped appearance दिख रहा है, right? So see, to draw this diagram is very easy. ये सारी डिटेलिंग आपको नहीं दिखानी है प्लीज. आई मीन ये तो सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉपर एक्सक्लूसिव डायग्राम मैंने लिया हुआ है. आपको ये वेन आर्टरीज कुछ भी नहीं दिखाना है. आप ये ड्रॉ कर लो, दैट इज मोर देन इनफ. अब लेबलिंग क्या करना है? लेट मी शो द लेबलिंग. सो फॉर दिस आई विल रब दिस डायग्राम and I will make my labelings now. I'll show the labelings now. Diagram कैसे draw करना है ये आपने देख लिया. So this becomes your renal cortex. अब आप renal नहीं भी लिखोगे then also it is well and fine. Okay kids, then also it is fine. आप सिर्फ cortex लिखो then also it is okay. Okay, अब आपको ये region को medulla दिखाना है. Okay, so this is medulla, मतलब middle part. These are renal pyramids. Yes, these are renal pyramids. Okay, this region is renal pelvis. ठीक है, अब ये जो आउटर ब्राउन कलर का लेयर दिख रहा है, दिस इज कैप्सूल, जो कि किडनी का कवरिंग है. ओके, दिस इज कैप्सूल. नाउ यस, हियर दिस बिकम्स द हाइलम. ये जो नॉच है ना यहाँ पे, द नॉच फ्रॉम वेयर द यूरेटर इज अराइजिंग, दिस नॉच इज हाइलम. आप इसको लेबल कर दो हाइलम. ओके, दिस इज रीनल आर्टरी. या, and this one is renal vein. Fine, it's that easy, correct? Yes, now you can label this as renal calyx or calyx. कैलिक्स यानी कि हर एक पिरामिड में से जो ब्रांचिंग निकल रहा है उसको कैलिक्स कहते हैं, विच इज जॉइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ पेल्विस. बट डोंट डू इट बिकॉज ये वाली चीज, मतलब ये जो लेबलिंग है, ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है. तो अननेसेसरी इट विल क्रिएट द कंफ्यूजन एंड आप ही खुद फंस जाओगे, राइट? सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द किडनी. renal cortex which is appearing dotted, renal medulla which has a pyramids that is appearing striated, renal pelvis that is by joining the calyx of each pyramid it forms a huge area or the central area or the central cavity of the kidney which is called pelvis, and the entire kidney is covered externally by the capsule, and the pelvis is it is continuing in the form of ureter, and the ureters are coming out from the notch which is called as hilum. Through the same notch renal artery is entering and renal vein is coming out. इट्स वेरी सिंपल, राइट? अब ये डायग्राम या तो आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा या तो फिर ये डायग्राम ऑलरेडी दिया जाएगा एंड इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो दैट्स क्वाइट इजी. अभी सपोज अगर उन्होंने यहाँ पर एरो ये अंदर की तरफ दिया और ये एरो बाहर की तरफ दिया, देन इट इज वेरी इजी बच्चा लोग, दैट द एरो विच इज गोइंग इनसाइड, दैट मींस ब्लड उसके अंदर एंटर कर रहा है. विच टाइप ऑफ ब्लड? अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड. और अगर एरो बाहर आ रहा है तो इट इज क्वाइट नेचुरल कि वो रीनल वेन है. ओके, रीनल वेन इज कमिंग आउट एंड दैट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्योर वन. ओके, तो ऐसे कुछ थोड़े बहुत एरोज वगैरह दिए रहेंगे एंड आपको उसको आइडेंटिफाई करके लेबलिंग करना है. सो आई होप द लेबलिंग इज वेरी इजी गाइस. यस, डायग्राम सेशन कॉन्फिडेंस काफी गेन करवा रहा है एंड आई एम श्योर आपको काफी कॉन्फिडेंस आ भी गया होगा. सो आई थिंक मेहनत सफल जा रही है ना? चलो, सो लेट्स मूव फर्दर.
वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, दैट इज द थर्ड डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो कि अपन फटाफट इसकी लेबलिंग कर लेंगे. ओके, लेबलिंग के साथ साथ आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन कहां पर हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं. दैट इज द ओके, सो द वेरी फर्स्ट ओवर हियर, दिस वन इज glomerulus, right, and this one is Bowman's capsule. Right, together these two is called as malfunction corpuscles. Now आप चाहो तो ये लिखो या फिर आप ये नहीं भी मेंशन करोगे, then also it is well and fine. Okay, now this becomes the efferent arteriole, क्योंकि बाहर निकल रहा है. ओके, बाहर निकल रहा है, एज यू कैन सी ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रहा है. एंड दिस इज द efferent arteriole, the one which is going inside the glomerulus. Yes, the one which is carrying the blood inside the glomerulus. Yes, now this is the PCT. Now PCT मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा नाम लिखोगे, that is proximal convoluted tubule. This is descending limb of yes, this is descending limb of, मैं आपको बता रही हूं, मैं क्यों बोल रही हूं, descending limb of loop of Henle. Okay, and this becomes the ascending limb of loop of Henle. Fine. क्यों? Because they purposely ask this. वो यहां पे भी एरो ड्रॉ करेंगे, वो यहां पे भी एरो ड्रॉ करेंगे. अब दो तो लूप ऑफ हेनले नहीं हो सकता, करेक्ट, बट सिंगल लूप ऑफ हेनले हैज two limbs. It's a U-shaped loop. It's a hairpin U-shaped type of loop, or you can say a tubule. So अगर वो दोनों जगह पे एरो दे रहे, then use your brain. They're asking about descending limb and ascending limb. The one which is going down is descending, the one which is coming up is ascending. Fine. ये हो जाता है DCT, that is distal convoluted tubule. Please do not write on the short forms, full form लिखो. And finally ये आपका हो जाता है collecting duct. Now one very important labeling is still remaining over here. Everyone knows this. मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? That is this. Either you write down this as capillary network. Okay, capillary network, या और उसको ब्रैकेट में डाल दो वासा रेक्टा. ओके, प्लीज ब्रैकेट में डाल दो वासा रेक्टा, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये टर्म डालोगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन और अच्छा पॉजिटिवली जाएगा कि चलो आपको बायोलॉजिकल टर्म भी पता है. नाउ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पे हो रहा है? मैल्फिजन कॉर्पस्कल्स में, दैट इज ग्लोमेरुलस एंड बोमैन्स कैप्सूल. एफरेंट आर्टेरियोल ऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड लेके जा रहा है विद हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ विच ओनली द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज गेटिंग फिल्टर्ड आउट. प्रोटीन्स एंड ऑल अदर heavy molecules are still remaining in the blood with the blood corpuscles, and only the liquid part is coming out in the in the Bowman's capsule, in the neck of the Bowman's capsule. So the membrane is permeable only for the liquid material, that is solvent material, but not the solute. And the blood which is coming out of the efferent arteriole is with a low pressure, क्योंकि since filtration करवाने के लिए high pressure की जरूरत है, इसलिए blood यहाँ पे ज्यादा hydrostatic pressure से flow हो रहा है. Now this filtrate is called as glomerular filtrate. मतलब ये जो arrow यहाँ पे दिखा है ना बच्चा लोग, this arrow is indicating glomerular filtrate which is coming out. Okay. Now this glomerular filtrate goes into the PCT, जहाँ से maximum reabsorption हो रहा है of water and glucose and other substance like amino acids. Then the filtrate is coming down in the loop of Henle, जहाँ पे loop of Henle में little bit of sodium ions and water is also reabsorbed. Then the filtrate goes into DCT, जहाँ पे tubular secretion हो रहा है. As you can see अंदर का arrow, tubular secretion wherein penicillin, drugs and other medicinal compounds have been secreted, which has not been filtered over here. And finally यहाँ से DCT से जो अंदर आ रहा है collecting duct में, that is urine. सो बेसिकली यूरिन का यहाँ पे प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो रहा है, यूरिन का प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन वे में फॉर्मेशन हो रहा है. दैट्स व्हाई किडनी इज ऑल्सो मेंट फॉर दी ऑस्मोरेगुलेशन. बेसिकली नेफ्रॉन इज ऑल्सो मेंट फॉर दी ऑस्मोरेगुलेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ दी ब्लड.
So I hope you understood with this labeling as well. Now the last labeling which I have taken for today's session is of only malfunction tubule. You can see that, right? So quickly मैं आपको इसका भी labeling बता देती हूँ. It's very simple. Now this becomes your Bowman's capsule. Yeah. Now this becomes the neck of Bowman's capsule. अगर उन्होंने separately पूछा तो, yeah, this is the glomerulus, yeah, and together it is called as malfunction tubule, correct? Now, if you see यहाँ पे arrow draw किया है, so this is afferent. ना वो purposely आपसे पूछेंगे A and B. इसको A लेबल करेंगे, इसको B लेबल करेंगे, वो पूछेंगे आपसे what is A. So A is afferent arteriole, okay. B is efferent arteriole, which is going to form the capillary network, that is vasa recta, joining it to the veins, right? That means efferent arteriole जो है वो it will surround to the PCT, then it will join to the venules, and venules will join to form the renal vein. Fine. Now ये जो yellow arrow है वो क्या होगा? This is glomerular filtrate. Glomerular filtrate. Now, giving this diagram, they can ask you that which process is shown in the diagram. This arrows. That is ultrafiltration. Define ultrafiltration. It is a process in which the blood is flown with the high hydrostatic pressure. Oxygenated impure blood is flowing with the high hydrostatic pressure through the afferent arteriole, wherein the liquid part of the blood is filtered out, leaving behind the corpuscles and the protein part in the blood, and that is taken up back by the efferent arteriole. So the liquid part which is filtered in the Bowman's cup or in the neck of the Bowman's cup is called as glomerular filtrate, and this entire process is called as ultrafiltration. Okay, so ये पूरा उसके बारे में, malfunction tubule के बारे में. Then they can also ask you that why afferent arteriole is wider than the efferent arteriole. So simple, इसका आंसर आपको ये देना है that since the blood is flowing with the high hydrostatic pressure, so to create that high hydrostatic pressure, afferent arteriole is purposely wider than the efferent arteriole, because efferent arteriole blood बाहर लेके जा रहा है, that is it is taking the blood out of the kidney after the filtration, so it is purposely narrow. Fine. So yes, as you can see, all the diagrams have been covered up for you, specially for you, ताकि आपका 10th का board preparation बहुत ही smoothly जाए and you prepare very well for your board exams and you gain good marks in your diagrammatic section, that is section B. I think मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से cover up कर लिया है with the 3 diagrammatic sessions and all experimental based questions भी discuss कर लिए है. So I hope you have gained lot of confidence from this session, and the only final thing that I would like to tell you is that work hard and dream big and never give up with your studies, because ultimately जितना आप hard work करोगे वो आपको result भी उतना ही अच्छा देगा, that is bright result देगा. So stay tuned with our bright channel and ऐसे और भी videos आते रहेंगे for your easy preparation of your board exams. So all the best and take care of yourself. Thank you.